Hello everyone, welcome to Xploreacademy. Today we are going to be talking about the first chapter of ninth chemistry, matter in our surroundings. ठीक है? तो ये सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का एंड इट इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर. सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. ठीक है, पहले इस चीज को देख के ही व्हाट कम्स इन योर माइंड, व्हाट इज द टर्म कॉल्ड मैटर, right? Just look around yourself. What are the things which you see where you are sitting? There might be a table, there might be a pen, a book, and etc. etc. right? So ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? मैटर है. ठीक है, सो अगर मैं डेफिनेशन के टर्म्स में बोलूं तो मैटर क्या है? इट इज नथिंग बट इट हैज सम वेट और सम मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस. ठीक है, तो वो सारी चीजें जिसका कोई मास होता है और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को हम बोलते हैं मैटर. ठीक है, सो ये चैप्टर में वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, देन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैटर इज एनीथिंग जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस एंड उसका कोई मास होता है. ठीक है, so I gave you an example, a table, a book, etc. are nothing but उसका they are matter क्योंकि वो कुछ उसका मास है, कोई वेट है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? देन मैटर को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं फिजिकल स्टेट पे और केमिकल कॉम्पोजिशन पे. ठीक है, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो ये चैप्टर में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and the chemical properties of matter we are going to discuss in the next chapter. ठीक है, on the basis of physical state, matter can be classified as solids, liquids and gases. Like example, it would be solid, I take example ice, liquid it would be water, and gases, that is water vapor. Okay, that is how you classify on the physical state, that is solids, liquids and gases. देन केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं एज अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर. ओके, देन प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, दैट इज मतलब प्योर सब्सटेंस कैन आइदर बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. नाउ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होता है? अगर सेम टाइप के एटम से बना है, जैसे अगर मैं H2 ले लूं, O2 ले लूं, ये क्या है एटसेट्रा, ऑल आर नथिंग बट दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम. So we call it as an element. ठीक है, and if it is having different atoms like water, that is H2 है, H है and oxygen है, उसको हम क्या कहते हैं? Compound. Okay, then उसके बाद mixtures can be homogeneous or heterogeneous. Homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures क्या होते हैं? For example, if I take salt and water, it is a homogeneous mixture. मतलब क्या? देख, अगर मैं सॉल्ट और वाटर को मिक्स करूंगी, आफ्टर सम टाइम देयर विल बी नो डिफरेंस, राइट? यू कैन जस्ट सी इट गेट्स मिक्स प्रॉपर्ली, राइट? सो जो भी सॉल्ट है पूरा मिक्स हो जाता है, इट इज कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर. if I take example of, if I take a water and if I mix tea in that water or sand in that water, what you see, it does not get mixed properly, right? You can still see the sand particles or the tea particles. That is nothing but it's the heterogeneous mixture. Okay, now let's talk about matter. That is an important concept, that is particulate nature of matter. Now what do you understand by the word particulate? ठीक है, so basically ये जो matter है, what we talk about, that it is having some mass and it is occupying some space. But ये matter बना किससे है? What it is made up of? So matter is made up of very very small particles, or we can say tiny pieces, right? Like वो इतना small है that we cannot even see through microscope, right? So that is a particulate nature of matter. That is, matter is made up of tiny tiny small particles, right? ये जो particles है can either be atoms, molecules or ions. That is what is called as a particulate nature of matter. ठीक है, like matter बना है small small tiny particles से. ठीक है, जो particles either atom हो सकते हैं, molecule हो सकते हैं या ions हो सकते हैं. Now we'll talk about, that is, the properties associated with the nature of matter. ठीक है, कौन सी properties है, और ये बहुत बहुत important properties है. Question is asked on this कि what are the properties of particles of matter. You have to
Explain these three properties. That is, सबसे पहले the particles of matter have space between them. तो ये जो particles of matter के उनके बीच में क्या होता है, space होता है. Then particles of matter are continuously moving. And the third property is the particles of matter attract each other. ठीक है, ये है the third most important properties of matter. Right? Now you have to prove, मतलब हम बोल रहे हैं कि particles of matter में space है, वो continuous move करते हैं, वो attract करते हैं एक दूसरे को, but how can you prove it? Yes, so all that we gonna discuss in the next video, ठीक है, where we are going to discuss these properties in detail. For now, that's it. It was an introduction of this chapter, ठीक है. So if you like this video, do share it and also give a like. Thank you so much.